अत्र वेदवेदान्ताध्ययन शोधसंस्थानतः एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इत्यतश्च आयोजित इयं संगोष्ठी अद्य प्रातःकाले एव समारब्धा वर्तते। तत्रादौ प्रथमसत्रम् इदं प्रचाल्यमानं वर्तते। अस्मिन् सत्रे अध्यक्षरूपेण अहम् आह्वये प्रोफेसर सी उपेन्द्रराव महोदयं कृपया अत्र मञ्चोपरि आगत्य अध्यक्षस्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इत्यपि अहं सम्प्रार्थये। I would like to give a brief introduction about Professor C. Upendra Rao, sir. Professor C. Upendra Rao is a prominent scholar in the field of Sanskrit and Indic studies. He is the senior professor in the School of Sanskrit and Indic Studies at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He was a chairperson of Special Center for Sanskrit Studies at JNU and was appointed as a visiting professor on ICCR chair by Government of India in 2016 to teach in Cambodia. He taught Sanskrit in Vietnam in 2018. He has extensively written and published research papers and books in Sanskrit, Pali, Hindi, Telugu, and English languages. He received awards and certificates of honors from various institutions in India and abroad. He was a visiting professor in the Latvia University, Riga, Latvia National University of Kyiv Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, Ellen Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, Pre Shinok Raja Buddhist University, Phnom Penh, Cambodia, Department of History, Belarus State University, Minsk, Belarus, Hue Quang Buddhist Monastery, Vietnam, Southeast Asia. He delivered lectures and presented papers in international conferences held in foreign countries. He edited and authored 22 books. The present book of the Similes of Mahakavi Magha reveals his profound knowledge of Sanskrit literature and poetics. तादृशाः विद्वत्तलजाः अस्माकम् आमन्त्रणम् आदरेण स्वीकृत्य अस्मिन् सत्रे अत्र मञ्चोपरि विराजमानाः वर्तन्ते। तेभ्यः पुनः एकवारम् उभाभ्याम् अपि संस्थाभ्यां पक्षतश्च स्वागतं व्याहृत्य नमस्करोमि। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च अहम् अद्य अत्यन्तं मोदम् अनुभवामि यत् अस्माकं वेदवेदान्त अध्ययन शोध संस्थान पक्षतः अद्य शब्दार्थयोः वैज्ञानिकं स्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये एका संगोष्ठी रचिता। तत्र प्रातःकाले वयं समीचीनं कार्यक्रमं वयं सर्वं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् इदानीम् अस्मिन् सत्रे तत्र विद्वद्वयं पत्र समर्पणं कृतवन्तः। भाषादर्शन विषये बहवः विचाराः सन्ति, परन्तु शब्दार्थयोः यत् वैज्ञानिकं स्वरूपम् अस्ति तत्र वैज्ञानिकानां तत्र पाश्चात्यानां कः विचारः, भारतीयानां कः विचारः इत्यस्मिन् विषये वास्तविकरूपेण अस्माभिः चर्चा करणीया। पाश्चात्यानां कः विचारः इत्यस्मिन् विषये प्रातःकाले वयं किञ्चित् वयं श्रुतवन्तः। सच्चिदानन्दमिश्रमहोदयः उक्तवन्तः, there are so many theories, so many views expressed by the Western philosophers about the relation between the word and its meaning. The relation between word and its meaning is very, very important. That was much discussed topic.
And Indian scholars, they also told that in the morning also, all speakers, I agree that Western scholars also did this kind of investigation, the relation between the word and its meaning, but our Indian scholars have done unparalleled discussion in this theory. Unparalleled discussion. I very much appreciate this Veda Vedanta Shodha Sansthan to take such topic, because this topic itself, if you see this topic itself, if you analyze the views of our ancestors, Indian ancestors, Indian rishis on this topic, the relation between word and meaning, then you will understand the greatness of India. Very, very interesting views are expressed by our Indians. First, they discussed that what is the word and what is the meaning. Everybody accepted that. Kalidasa starts his Raghuvamsha, Vagardhaiva Samputtau, Vagardha Pratitantaye. And also Magha says in his poem, Shabdartho Satkaviriva, Dvayam Vidvan Apekshate, Nalambate Daishtikatam, Nanishidati Paurushe, Shabdartho Satkaviriva, Dvayam Vidvan Apekshate, Satkavihi Yada Shabdartho Apekshate, Tatha Vidvanapi Dvayam Apekshate, Na Daishtikatam, Na Paurusha, Ubhayamapi Avashyak. Ekasya Rajnyaha Krute, Daiva Sahayogaha api avashyakah, Prayatnaha api आवश्यकः. Tada eva raja sabalibhuto bhavati iti Magaha katheti. Tadartham ubhayoho avashyaka tadartham shabdartho kaveh kurtepi. A poet also wants two, word and its meaning. This kind of discussion was dealt in Mimamsa and also Nyaya and other Vyakarana also, but in poetics also. This is very interestingly, it was dealt from the beginning. The great teachers of poetics have been telling, Nanu Shabdartho Kavyam. देखिए शब्द और अर्थ दोनों मिलके काव्य होते हैं. भामह ने ऐसा ही कहा, दंडी भी ऐसा ही कहा. Even Mammata also said, Tada doshau shabdarthau. Everybody except Jagannath, but because he wanted to show some unique features. But he also accepted in another way. But so in this way, we cannot divide the word and its meaning. And the big problem came in front of our ancient acharyas. If suppose if there is a inseparable meaning, association, the word and its meaning, then if you pronounce a word, the meaning which is coming, what is that meaning? There was a problem. Because without Sanketas, meanings cannot be understood. Every meaning means stamba, light and fan, all these are the meaning. Vastus. They all need Sanketa. Without Sanketa, you cannot understand them. But when you use the Sanketa to particular meaning, then what is that Sanketita? That is the problem. Then there are two very important views. Vyakarana say, you see, Sanketita is of 4 types, not 1. That said by, that was revealed by Mahabhashya in Patanjali, in Mahabhashya, in Ruksutra Bhashya. Chatushthayi Shabdanam Pravrittihi, Jati Shabdaha, Guna Shabdaha, Kriya Shabdaha, Yadrucha Shabdaha. Iti Shabdanam Pravritti Chatushthayi Bhavati iti Vyakarana Uktavanta yeto Ekayeva iti Vaktum na Shakyate. Chatra Shabdarthaha Shabdaha Chaturvidaha Bhavanti, Kechana Shabdaha Jativachakaha, Kechana Gunavachakaha, Evam Prakarena. Tarhi Miyamsakanam matam yadasti tarhi evam vadamaha chet vastutaha kopi gauhu iti vadati chet tasya arthaha kaha asti. Gauhu ityukte asmakam sammukhe yaha stitaha asti. The cow which is standing in front of us, that is cow. That means you are accepting Vyakti is the meaning as the meaning. Oh, if the Vyakti is the meaning, then problem comes. Miyamsaka said, just now, my colleagues told that Vedantins also have accepted the Bhatta theory,
in this. And Bhatta theory is very, very interesting. That they are only Mimamsakas means Bhattas only. Mimamsaka is of two types. So Bhatta said, and others also, they all accepted this. If you accept it, Gau means only the personality, physical personality which is standing in front of you. If you take that meaning, then there will be two kinds of problems: Anantya and Vibhichara. Two kinds of problems will come. So then what you have to say, no, don't take the Vyakti. It is better to take Jati. Jati should be the meaning. क्योंकि व्यक्ति यदि करेंगे, हमारे सामने जो गाय खड़े हैं वो गाय है, ठीक है, तो गेट के पास जो गाय खड़े हैं वो क्या है? तो गाय नहीं होगा ना, केवल यही व्यक्ति गाय हो गया। चलो उसको भी गाय कह दीजिए, उसको दूसरा नाम कह दीजिए, गाय मतलब कुछ दूसरा, गोई कह दीजिए, थोड़ा चेंज करके रख दीजिए उसका नाम। फिर वहां चौराहे में दूसरा गाय रहेगा, उसको क्या बोले, उसको थोड़ा चेंज करके दूसरा नाम रख दीजिए। ऐसे ही नाम रखते जाएंगे तो कितने गाय के लिए कितने नाम हमको रखना पड़ेगा, ये आनंद है। अब ऐसा रखेंगे तो फिर विचार भी हो जाएगा, किसका नाम क्या है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दो प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग इफ यू एक्सेप्ट व्यक्ति एज द मीनिंग ऑफ द शब्द। सो Mimamsaka said, no, don't take that. Better you take the Jati is the meaning, because Jati Nityam Ekam Anekanugatam Samanyam. So that is existing in everything. So Gau means you take the Gotva. Then problem will be solved, because whichever is having Gotva that is Gai. Gau means Gotva, aisa artha le lijiye directly. Gau means Gotva, not this the physical appearance, the Vyakti. Gotva you take, the problem will solve, because Gotva is there in every Gau. You cannot avoid it. So meaning should be Jati. So then that is why they said that nahi Gauhu, Swarupena Gauhu, Napya Gauhu, Gotvabhi Sambandhat Gauhu. Gotvabhi Sambandhat eva Gauhu bhavati, Swarupena na Gauhu bhavati, Napya Gauhu bhavati. Evam vadanti chet Nayayika vadanti, are Jati hi eva, यदि हन्तः स्वीकरिष्यन्ति सामान्य रूपेण व्यवहारे तत्र जाति गौ इत्युक्ते गोत्वम् इति, गोत्वं कथं वयं स्वीकुर्मः? गौरनुबन्ध्यः इति वाक्यं भवति। गौरनुबन्ध्यः इति वाक्ये गौः अनुबन्ध्यः भवति। गौः अनुबन्ध्य गाय को बांधना है यज्ञ क्रिया में, गाय अब गोत्व को लेकर बांधिए, देखेंगे हम कैसे बांधेंगे। तो यू कैन नॉट टाई गोत्वा, दैट इज व्हाई you had to take the Vyakti, you had to take the meaning. So then Mimamsaka said, no, there you had to imagine that, उसको आक्षेप कर लीजिए, वास्तविक रूप में शब्द का अर्थ तो जाति ही है, गोत्व ही है, लेकिन गोत्व से वो व्यक्ति जो है ना गाय, वो आक्षेप्त हो जाता है। then no problem solved. न्यायिका से no, शब्दबोध में आक्षेप नहीं चलता है, you cannot say this आक्षेप। So Nayayika said, then what should do? Mimamsaka asked to Nayayika. Nayayika said, don't worry, there is a solution, but you had to say Tadwan. Mamata says, very briefly, only one word he says for Nayayika theory. Means along with the Jati, you take the Vyakti along with the Jati. मतलब जाति से युक्त व्यक्ति ही उसका शब्द का अर्थ है, ऐसा ले लीजिए। तो गाय का अर्थ क्या है? गोत्व ये युक्त गो व्यक्ति, ये ऐसा ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सो इस प्रकार कितने विचार हुआ है, ये मैं तो ऊपर मैं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग ओनली ऑन सरफेस लेवल, ऊपर मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे विचार हैं। एक इतना आसानी से ये एक दूसरे का मत नहीं माने हैं, तो इतना गहरा विचार हमारे भारतीयों ने किया है। लेकिन बाद में फिर बौद्धों ने कहा है, क्योंकि बौद्धों ने नित्यतावादी है ही नहीं, क्षणिकवादी है किसी को, क्योंकि संसार में कोई क्षणिक है, सब कुछ एवरीथिंग इज मोमेंटरी। भगवान बुद्ध कहता है सारे दुख सर्वम जगत दुखमयम भवति, कोनो हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति, अंधकारेण वो नद्धा पदीपम न गवे सथा। Why you are smiling? Why you are enjoying the life? I do not understand. Everything is burning. You are not understanding. So if you are laughing and if you are enjoying this world, that means you are completely covered with ignorance. Covered with ignorance. So why don't you light a lamp? Deep jalaiye. Jnana ka deep jalaiye. You will understand the reality of the world. So why he said like this? Everything, because you are anitya, nitya. Same thing Vedanta. Bhagavan Buddha said. So because you are understanding this impermanent world as a permanent world, because that is a momentary, kshanika, so they accept that theory. That is why
they say that you see, jati cannot be accepted because jati is nityam. You said that jati is a permanent one. A permanent one is nothing. Is there no permanent in the world? That is why better then how to say the meaning is a big problem. What is the meaning of the word? Ab kaise batayenge? Then there is a procedure. Athad vyavurtihi apoha. Apoha yo shabdartha. ऐसा all ये सारे व्यक्ति जाति सब झंझट ही नहीं रहेगा. This very easy process apoha. And this apoha is very interesting. Dhananjay is sitting in front of me. Dr. Dhananjay. अपोहा तेलुगु में एक बड़ा प्रचलित शब्द है. आप लोग जो तेलुगु जानते हैं, ये बहुत मजेदार विषय है. इस प्रकार के हमारा हमको सब जानना चाहिए. अपोह मतलब तेलुगु में एक बड़ा प्रचलित शब्द है. हमारे तेलुगु में अपोह मतलब भ्रांति है. देखिए बौद्धों को जो अपोह को वो भ्रांति में बदल दिए. अभी भी आजकल भी हम अपोह मतलब भ्रांति. अरे ఎందుకు अपोह? किमर्थम अपोह? अपोह भ्रांति. Apoha. भ्रांति. Because it came, you see, it came like that. जैसा हमारे बोलते हैं ना देवा नाम पे इति भाई मूर्खे, वो बना दिए. तो शायद ऐसे ये भी ऐसे ही हुआ होगा. ये बहुत विचित्र विषय है. तो अपोह मतलब ये भ्रांति कैसे आ गया? क्योंकि अपोह तो एक सिद्धांत का नाम है. तेलुगु में अपोह मतलब भ्रांति है. अपोह मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग. एक भ्रांति मिसअंडरस्टैंडिंग के अर्थ में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग. देखिए कितना इस सिद्धांत को ही एक प्रकार का एक ये करने के लिए शायद ऐसा आया होगा. आई डोंट नो, बट लेट अस थिंक व्हाट इज अपोह. अपोह मीन्स अथद व्यावृत्ति. अथद व्यावृत्ति मतलब जो वो नहीं है उन सबसे सेपरेट करिए, वो वही है. वो उसके शब्द का अर्थ है. जैसा गौ इत्युक्ते न अश्वः न कुकुरः न कुक्कुटः न गर्दभः, सारे चीजों से जो अलग करके जो बचा है ना, वही गाय का अर्थ है. बस वो क्या है वो नहीं बता रहे. बचे हुआ जो है वही अर्थ, रिमेनिंग. अथद व्यावृत्ति. अथद व्यावृत्ति एवं गो शब्द से अर्थ. ये भी बहुत लॉजिकल है. बिकॉज यू आर पुटिंग ऑल दिस लार्ज वर्ल्ड नंबर ऑफ द थिंग्स इन वन वे एंड द ओरिजिनल मीनिंग इन अदर वे. तो भगवान इसको समझाने के लिए एक छोटी सी मैं कथा बोलता हूँ वेरी ब्रीफली. भगवान राम जब वनवास में गए थे तो वो भी वनवासी के रूप धारण करके गए थे. सीता माता भी उनके साथ थी. वो घूमते घूमते ऋषि चले गए, अंदर जंगल में चले गए. ऋषियों के गांव में वो प्रवेश कर दिए. ऋषि ग्राम में प्रवेश कर दिया. सारे ऋषियों ने, ऋषि पत्नियों ने उसका सादर रूप में निमंत्रण किए, आह्वान किए हैं. तो सब निमंत्रण करके आह्वान कर उनको बिठाए, श्री राम और सीता. लेकिन श्री राम को ऋषियों में बिठाए और सीता को इस दूसरे ग्रुप माता उनके ऋषि पत्नियों के ग्रुप में सीता बैठी. तो सब आनंद अनुभव कर रहे थे. एक ऋषि पत्नी विलंब से आई है. ऋषि पत्नी वहां नहीं थी, एक ऋषि पत्नी विलंब से आई है. वहां विलंब से आकर के वहां पहुंच गई. और पहुंचने के बाद उनको पहुंच तो गई, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कौन राम कौन है इसमें. क्योंकि ही इज आल्सो लुकिंग लाइक सेज. क्योंकि वनवास के उनका स्वरूप वेश धारण ऐसा ही था. शी वाज सो मच कंफ्यूज्ड, हु इज रामा इन दिस. सो देन शी अप्रोच्ड सीता एंड आस्क्ड हर, हु इज रामा इन दिस, आई वांट टू सी हिम. तो सीता, कोई बोलते हैं कि भारतीय पत्नी ये मेरा पति है, ऐसा नहीं बोल सकती. शी नेवर सेड लाइक दैट. अब वो ऋषि पत्नी को बहुत बेचैन हो रही है, कौन राम कौन है. शी इज नॉट टेलिंग एट ऑल. कैसे पता चलेगा? तो वो पूछ रहा है कि आपका पति कौन है, बताइए. वो मौन रूप में ऐसा सर झुका के स्थित हो गई सीता. तो उन्होंने एक नया पॉलिसी अपनाया कि ऐसा करे तो पता चलेगा. कि उन्होंने एक एक ऋषि को, ये आपके पत्नी है क्या करके एक ऋषि को दिखाया. सीता बोले नहीं ये नहीं. तो फिर ये है क्या? तो नहीं वो भी नहीं है. तो वो है क्या? सबको पूछ लिया है. लास्ट में राम बच गया है. ये आपके पति है क्या पूछे तो वो चुपचाप बैठ गई. तो तब उनको पता चला अच्छा ये राम है करके. तो एवं प्रकार ना अतद व्यावृत्ति तो समीचीनम् उदाहरणम्. तत्र ये सर्वेपि ये रामः अन्ये ऋषयः गताः, अवशिष्टयः अस्ति स एव रामः. परन्तु रामः सः इति मम पतिः सा न उक्तवती, सीता न उक्तवती. केवलं मौनेन स्थितवती, परन्तु अन्येषां निराकरणं तु कृतवती. अतद् व्यावृत्तिं तु कृतवती. तदर्थमेव
यत् अवशिष्टं स एव अर्थः इति बौद्धाः वदन्ति। तदर्थम् अबोह्येव शब्दार्थः इति बौद्धाः वदन्ति। एवं प्रकारेण विभिन्नमतानि सन्ति। अस्माकं प्राचीनभारतीय साहित्ये एते विषयाः अत्यन्त भाषादर्शनविषये इतः पूर्वं ये वक्तारः बहवः उक्तवन्तः, यतो वाचो निवर्तन्ते, तत्र कथम् अनुभवः इत्यादि, तत्र वास्तविकरूपेण भाषायाः परिमितता कीदृशी इति, तथापि आवश्यकता अस्ति इति सा उक्तवती। एवं प्रकारेण विभिन्नविषयाः सन्त्येव, परन्तु शब्दार्थयोः सम्बन्धविषये तत्र अस्माकं प्राचीनैः बहुधा विचारः कृतः अस्मिन् विषये। तदर्थम् अहं भूयो भूयः वेदान्त संस्थानम् अभिनन्दामि, यतोहि एतादृशं विशिष्टं विषयं ते स्वीकृतवन्तः। एषः अत्यन्तं रोचकः विषयः संस्कृतज्ञानं कृते, अन्येषां कृतेपि। यतोहि शब्दार्थसम्बन्धः यावत्पर्यन्तं न अवगम्यते तावत्पर्यन्तं वयं समग्रे वाङ्मये वयम् अग्रे गन्तुमेव न शक्नुमः। तदर्थमेव शब्दार्थयोः सम्बन्धः अत्यन्त दृढः इति सर्वैरपि आचार्यैः अङ्गीकृतः। परन्तु शब्दार्थः सम्बन्धः नित्यः भवति। तत्र शब्दः अस्ति चेत् अर्थोऽपि भवति, अर्थः अस्ति चेत् शब्दः भवति। तदर्थमेव कालिदासेन तत्र उक्तं वागर्धाविव सम्पृक्तौ इति। एवं प्रकारेण एतादृश विचाराः दार्शनिकपरिषदः सह सौजन्येन एतादृशेषु विशिष्टेषु विषयेषु अग्रेपि कार्यक्रमाः कर्तव्याः। अपरञ्च अहम् अस्य संस्थानस्य निर्देशकस्य भूयो भूयः अहं प्रशंसां करोमि एतादृश्यां स्थितौ अपि, यत्र जनाः आगन्तुमेव न शक्ताः। वस्तुतः बहवः छात्राः सन्ति, बहवः अध्यापकाः सन्ति, परन्तु सर्वे विभिन्नकारणैः इदानीम् आगन्तुं न शक्ताः। तथापि एतादृशं कार्यक्रमं कृतवन्तः इत्युक्ते तेषाम् उत्साहः एव तत्र कारणम्। उत्साहो बलवानार्य, तत्र उत्साहः अस्ति चेत् उत्साहेन सर्वं सिद्ध्यति। अग्रे अस्मिन् संस्थाने इतोपि एतादृश प्रशंसनीयकार्यक्रमाः बहवः भविष्यन्ति इति अहं दृढं विश्वसिमि। तदर्थम् अत्रत्याः सर्वेपि भूयो भूयः अस्माकं श्रीनिधिमहोदयः अपि बहु परिश्रमं कृतवान्। अन्याः सर्वेभ्यः भूयो भूयः तत्र वर्धापनानि अभिनन्दनानि समर्प्य मत्कृते एतादृशम् अवकाशं प्रदत्तवन्तः। तदर्थं धन्यवादाः वितीर्य विरमामि।